So look in this question. The question says, calculate GDP at MP and national income by production method एंड इनकम मेथड। तो अभी हम इनकम मेथड से क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको ये नहीं सिखाया। हमारा मेन फोकस है एक मेथड, प्रोडक्शन मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, calculate gross value added at market price. Its formula is value of output of all sectors, primary, secondary and tertiary, minus intermediate consumption of all sectors. तो जो भी बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट हो वो इस तरीके से आप देखें। तो दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल सेक्टर्स एंड दिस इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ऑल सेक्टर्स। सो 1000 और ये हो गया 2600 1400 आएगा माइनस 1200 तो इट्स 1400। ये हमारा है फर्स्ट आंसर, GVAMP। इट इज इन रुपीज लैक्स। Yes. Now, second answer, you need to calculate national income NNP at FC, and you have GVA at MP. I told you that VA is also termed as GDP, so you can also write this as GDP at MP. Now, formula आप convert करेंगे, so minus depreciation plus NFIA एंड माइनस NIT। अब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपका 1400 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, सो इट्स अ 40 प्लस NFIA इट गिवन है आपको पास डायरेक्ट माइनस का 20 एंड माइनस NIT भी डायरेक्ट गिवन है, फिर तो कुछ करना नहीं, 10 हो गया। अब ये सब कुछ माइनस ही करना है क्योंकि वैल्यू माइनस की है, तो 40 50 60 70 माइनस करने पर आंसर आया 1330। दिस इज नेशनल इनकम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, तो लास्ट क्लास में कराया था, उसी के बेस का एक क्वेश्चन है। आप सबका एक क्वेश्चन ठीक होना चाहिए था। This is called national income. So now have one more question. Now try to attempt this question. Just a minute. Now it's visible. Yes, sir. Yes, sir. Solve it. So first of all, make sure कि read carefully what you need to calculate. So it's a question of only value added output. Read carefully and do it. So look in this question. The question says calculate gross value added at market price of primary sector. That means आपको निकालना है of primary sector, फर्स्ट वाले का। तो प्राइमरी सेक्टर का फाइंड आउट करने के लिए आप वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर माइनस IC ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सो इट्स 800 minus 400, so your answer is 400. Likewise, gross value added at market price of secondary sector, क्योंकि इसने अलग अब सेकेंडरी का भी पूछा है, तो इसका भी आंसर इसी तरह से बनाएंगे, VO सेकेंडरी सेक्टर माइनस IC सेकेंडरी सेक्टर। सो सेकेंडरी सेक्टर का VO है आपका 200, इट्स 100, so it's again 100. Likewise, gross value added at MP of tertiary sector, तो इसका सेम फॉर्मूला VO of tertiary sector
minus IC of tertiary sector. So it's a 300 minus it's a 50, तो 250. Now ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था कि सेकेंडरी और प्राइमरी और टर्सरी का क्या है. अब हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है ओवरऑल. सो ओवरऑल नेशनल इनकम के लिए आप पूरा इकोनॉमी का GVA एट MP पता करेंगे ओवरऑल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर. तो तीनों के आंसर्स आप प्लस कर लेना, 400, 100 और 250. तो इट्स अ 750. 750 सही यही आ रहा है. अब हमें निकालना है नेशनल इनकम. सो नेशनल इनकम, सपोज इधर मैं लिख देता हूं NNP एट FC. आप निकाल चुके हैं GDP एट MP. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट VA इज आल्सो टर्म्ड एज DP. सो GDP MP. नाउ माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA minus NIT. So GDP MP 750. Depreciation, this is called depreciation, consumption of fixed capital of all sectors given है, तो हमारा काम आसान हो गया. 80 plus NFIA. NFIA factor income received minus paid, तो 10 minus 20. 10 minus 20. And minus NIT, indirect tax minus subsidies. So indirect tax is 50, subsidies 20. So it's a 50 minus 20. So now 750 minus 80. अभी माइनस का 10 हो गया, तो ये माइनस 10 और माइनस 20, 30, 30. अब ये सब माइनस कर दो आप. 120 माइनस करने पे कितना बचा? 630. Yes. So final answer is 630 rupees crores. This is the final answer. So this is the way to solve this kind of question, so that please read question carefully while writing the answers. The question is asked value added of primary, secondary and tertiary. तो आपसे जब तीनों के नाम दे रखे हैं तो आपसे कंबाइंड नहीं पूछा है. ये कंबाइंड करके आप बता रहे हैं, कंबाइंड करके तो अलग आंसर हो जाएगा. तो आप क्वेश्चन ठीक करके भी गलत करोगे, फायदा क्या उस चीज का. So please read question carefully. In this question, you has been asked to calculate NNP at FC by value added method and expenditure method से NDP FC. तो आपको expenditure method नहीं करना. हमारा main target है only to focus on value added method. So calculate NNP FC by value added method. Do it now. So look students, the solution of this type of questions, those who are unable to understand. अब इतने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो अब तो वैसे आपको हर बच्चे को आना चाहिए, लेकिन फिर भी जिसको नहीं आ पाया है 1% मान लेते हैं कि नहीं आया. सो अगेन लुक क्लोजली व्हाट you have value of output, you have intermediate consumption IC. So you can get gross value added at market price. Formula is VO minus IC. So कितना हो गया टोटली? 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 2100 minus IC 800. So कितना डिफरेंस आया? 1300. 1300. So what you need to calculate? NNPFC. You have GVA at MP, or the same terms you can say GDP at MP. So minus depreciation plus NFIA minus NIT. So 1300. Depreciation, consumption of fixed capital is known as depreciation. So it's a 80. Plus NFIA, net factor income from abroad, direct given है minus 20. 0. Minus NIT, indirect tax this, subsidies this. तो IT 100 and subsidies. तो again 100 minus 100 तो 0 ही हो जाएगा. तो 80 20 प्लस करने पर आपका आंसर आया 1200. 1200.
This is your final answer. This is in lakhs. Yes, मेक sir. श्योर कि आप ये जरूर लाख करोड़ वगैरह जरूर लिखा करें, अदरवाइज आपका 1 मार्क्स इससे कम हो जाएगा. This is the solution of this question. I hope all of you have done correct answer. Yes, sir. Yes. So in this question, find, I am writing find national income NNP at FC by value added method. By value added method. तो मैंने अभी आपको यही सिखाया है. तो इस क्वेश्चन में वैल्यू एड मेथड से NNPFC फाइंड आउट करें. So look what you have in this question. You have, look closely, gross value added at market price, primary sector, secondary sector, and tertiary sector. You have all these gross value added. So total gross value added of these all sectors to be added 300, 200, and 700. So its total value added is 1200. Now find out national income NNP at FC. You have gross value added at market price. So minus depreciation plus NFIA minus NIT. So GVMP 1200 minus depreciation. Depreciation here is given as this is depreciation, sorry, consumption of fixed capital, depreciation 150. So 150 plus NFIA, net factor income from abroad, given 20, minus NIT, net indirect taxes, this is NIT. So NIT is 120. So now solve it. 1200 150 माइनस करिए. करो बेटा, क्या आंसर आता है? करो, माइनस करो. सर आपने जीवीएमपी में माइनस तो किया ही नहीं इंटरमीडिएट कंजप्शन. वो जरूरती सर क्या, जब फाइनल हमको जब सर फाइनल डायरेक्ट आंसर 950 आ रहा है. जब डायरेक्ट मेरा हमको भी यही है. जीवीएमपी गिवन अच्छा अच्छा है अच्छा. तो हमें हाँ क्यों हाँ सॉरी सर. आईसी माइनस करना है? हमें यस सर तो यस सर. सिर्फ हमें माइनस नहीं करना, मुझे पता था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था तुम लोगों को, तो बोल ही नहीं पाओगे. हाँ सर 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 हमने तो 950 सर फाइनल तीनों का अलग आंसर है और अलग मेरा निकाल आंसर भी दिए. 950 आ रहा है. वो तो सब 50 आ रहे थे ना सर पहले. सर 950 है. नहीं मेरा सर अलग ही है. 950 आ सर रहा है सर. मेरा भी मैंने ठीक है. मैंने एक बार भी आंसर नहीं बोला था. 950 आंसर है करोड़ हाँ, में, सर यही आ यस रहा है. सर. रुपीज. दिस इज द फाइनल आंसर. यस मैं सर. बोलना कम चाह रहा था लेकिन आपने म्यूट कर रखा था, नहीं तो मैं बोल रहा था. वो बोलना. 900 आईसी माइनस कर दी इसलिए 50 आ रहा था मेरा. हाँ, नहीं मैंने कुछ नहीं कहता ऐसा. जरूरती क्या थी? आप देखने क्या गिवन है, अच्छे से पढ़ लिया करो, उसके बाद सोल्व करो. यस. जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत होगा ही होगा. सो दिस इज द वैल्यू एडेड मेथड. नाउ मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है